Hello everyone. Today in this video I will explain you whole numbers and properties of whole number. So first of all you have to know what is whole number. What is whole numbers? Zero, 1, 2, 3, 4 all are whole numbers. And what is natural numbers? 1, 2, 3, 4. These are the natural numbers. It means natural numbers start with 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, just like this. And the whole number start with 0. So we can say that all natural numbers are the whole number. It means सारे जो natural numbers होते हैं वो भी क्या होते हैं? Whole numbers. And now properties of whole numbers. Now I'll tell you properties of whole numbers. Properties of whole numbers. There are some properties if you are adding two whole numbers, if you are subtract two numbers, if you are multiplying two whole numbers, and if you are divide two whole numbers. So the first one property is closure property. The first property is closure property. According to this closure property, if we add two whole number, it means अगर हम दो whole number को add करते हैं, if we are adding two whole number, then it gives a whole number. It means it will be a whole number. अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं होल नंबर को, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो भी एक होल नंबर होना चाहिए. सपोज a and b are the two whole numbers. So according to this property, a plus b equals to whole number. It means if you are adding two whole number, the result will be whole number. Suppose, for example, if you are adding 10 plus 2, it gives 12. And 4 plus 6, it gives 10. 8 plus 4, it means 12. So you know 12 is also a whole number, 10 is also a whole number, and 12 is again also a whole number. So it means this property is true. It means we can say that addition follows a closure property. It means if we are adding two whole numbers, और जब भी हम किसी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में जो नंबर आता है वो भी एक होल नंबर होता है. इट मीन्स इट फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी. एंड नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर, सपोज फॉर इन दिस एग्जाम्पल a and b are the whole number. So look at this, 10 plus 2 हमने 12 किया था. Now 10 minus 2 equals to 8. It is a whole number. 4 minus 6 equals to minus 2. But it is not a whole number, because you know whole number is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now look at this last example. 8 minus 4 is equals to 4. It is also a whole number. पर क्या हो रहा है, ये हमेशा होल नंबर ही रिजल्ट में होल नंबर को ही नहीं शो कर रहा है. It means it is a whole number, but it is not a whole number. So this property is not true. It means the subtraction of two whole number not follows the closure property. Okay, addition follows the closure property, but subtraction not follows the closure property. And now multiplication means, suppose again if a and b are the two whole number, and if we multiply, look at this same example. 10 and 2, if we multiply 10 into 2, it gives 20. It's a whole number. 4 into 6, it means 24. It is also a whole number. 8 into 4, it's a 32. It's also a whole number. So it means multiplication of two whole number follows the
closure property. Okay, and now the last one is division. It means if we divide two whole number, just suppose, look at this same example, 10 divided by 2, it gives 5. You know 5 is a whole number. So it's a whole number again. 4 upon 6, then it gives 0.66, just like that. So it is not a whole number. And 8 upon 4, it gives 2, it is a whole number. So if we divide two whole numbers, it will not follow the closure property. It means not true. I hope now you understand the first property. It means the closure property. According to closure property, if we add two number, if we subtract two number, if we multiply two whole number, and if we divide two whole number. So if we add two number, then it gives the whole number. So it follows the closure property. Subtraction don't follow the closure property. Multiplication follows the closure property, and division not follow the closure property. This is the first one property. The next property is commutative property. According to this property is, suppose again a and b are the two whole numbers, then a plus b is equals to b plus a. It means if we are changing the order, does not change the sum, because first हम क्या कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी में, a plus b, दो होल नंबर को पहले हम सपोज a is 2 and b is 3, तो 2 plus 3, और and now we are changing the order 3 plus 2. So it means according of this property, it means if we are changing the order, does not change the sum. Look at this example. Look at this example. Suppose we are, there are two whole numbers, one is 10 and the second is 2. Then we will write 10 plus 2. हमारा फर्स्ट होल नंबर 10 है, सेकंड 2 है. सपोज हमने यहाँ पर 10 और 2 ले रखा है, तो 10 प्लस 2 इक्वल टू, नाउ वी विल राइट 2 प्लस 10. एंड नाउ अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 12 एंड इट गिव्स ऑल्सो 12. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर हम उनकी ऑर्डर चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, पर सम जो है सेम रहता है. सो इट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इट मीन्स इट्स अ ट्रू. इट मीन्स addition of two whole numbers follows the commutative property. And now the second is subtraction. अब हम देखेंगे कि ये इसको फॉलो करती है या नहीं. सो a माइनस b, इट मीन्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज नॉट इक्वल टू b माइनस a के. लुक एट दिस. अगर हम 10 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 10. सो अगर हम 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट गिव्स 8 एंड 2 माइनस 10 इट गिव्स माइनस 8. तो ये दोनों क्या है, सेम नहीं है. सो इट मीन्स नॉट ट्रू. इट मीन्स इफ वी आर सब्ट्रैक्ट द टू होल नंबर, इट विल नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड नाउ मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स a into b equals to b into a. It means 10 into 2 equals to 2 into 10. So both gives the same number. 10 2s are 20 and 2 10s are 20. So it follows the commutative property. And now the third one, fourth one, the last one, division. A divided by b is not equal to b upon ak. Suppose 10 upon 2 gives the 5. But if we are divide 2 upon 10, then it gives 0.2. And 0.2 is not a whole number. And 5 is a whole number. So it is not true. It means it don't follow the commutative property. So I hope now you understand these two properties of whole number. The first is closure property and the second is commutative property. And now the third property is associative property. According to associative property, if there are a, b, c are three whole numbers, अगर हमारे पास तीन whole numbers हैं a, b and c, तो according to this property,
A plus B plus C is equals to A plus B plus C के. It means if we are doing the sum of three whole numbers and if we are changing the order, it does not change the sum. We can write in both the types. It means A plus B plus C and A plus B plus C in bracket. You know, जो भी कुछ ब्रैकेट में लिखा होता है उसे हम पहले सॉल्व करते हैं. ओके, लुक एट दिस एग्जाम्पल. सपोज here it is A equals to 2, B equals to 3 and C equals to 4. Then put the values. A है 2, 2 plus 3 and now plus 4. Again 2 plus 3 plus 4 and now solve. First we will solve the bracket. So 5 plus 4. Here it is 2 plus 7. So 5 plus 4, 9 is equals to 9. It means it follows the associative property. And now in subtraction कि ये फॉलो करती है नहीं. According to associative property, A minus B minus C is equals to A minus B minus C. And now put the values. 2 minus 3 minus 4 equals to 2 minus 3 minus 4. So it is not applicable. Okay, it gives the different digit. So it is not applicable. Because in this 2 minus 3 minus 1 and minus 4 gives the minus 5, and here it is 2 minus 3 minus 1 and plus it gives the 3. It means it is not applicable. And now look at this in multiplication. It means 2 into 3 into 4 is equals to 2 into 3 into 4. First we will solve the bracket. 3 to the 6, 6 into 4 and 2 into 12. So 6 4s are 24 equals to 24. So it means it follows the multiplication, follows the associative property. And in division it is not applicable. It not follows the associative property. And now the last property is property of 0. According to this property, if 0 is added to any whole number, then we get the same number. अगर हम 0 को add करते हैं किसी भी whole number में, then we get the same number. Look at this. Suppose, for example, you know, 10 is a whole number. If you add 0, then you get 10. 5 plus 0, 5. 3 plus 0, 3. Okay, so it means if 0 is added to any whole number, then we get the same number. And 0 is also called the additive identity. Remember that 0 is called also called, क्या कहते हैं इसको, additive identity. 0 is also called additive identity. And in subtraction, look at this. If we will subtract 0, then 10 minus 0, it means 10. 5 minus 0, it means 5. It's also a whole number. It is also a whole number. 3 minus 0, it means 3. But you know 0 is also a whole number. 0 minus 2 equals to, it gives minus 2. It means minus 2 is not a whole number. So it does not follow the property of 0. And now if we multiply 0, any number, 0 into 2 equals to 0, 0 into 5 equals to 0, 0 into 3 equals to 0. And division by 0 is meaningless. किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन बाय 0 इज
meaningless. So we can say that in property of 0, then 10 plus 0, 10, it's a whole number. 5 plus 0 is 5 whole number. 3 plus 0 is a whole number. But in subtraction, if 0 is subtracted from a whole number, then the result is number itself. Just like the 10 minus 0, 10, 5 minus 0, 5, 3 minus 0, 3. But subtraction from 0 is not defined for whole numbers. And now the next is, another property is distributed property of multiplication over addition. And the second is distributed property of multiplication over subtraction. So we use property of multiplication to make calculation easier. हम क्यों यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए. एंड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over addition, according to this, a into b plus c is equals to a into b plus a into c. Look at this. a multiply b plus c. So हम इसको कैसे करते हैं? फर्स्ट a की मल्टीप्लाई b से एंड आफ्टर दैट a की मल्टीप्लाई c से. So a into b we will put in the bracket, and after that we will put the plus, and now a into c, like this. Suppose a equals to 2, b equals to 3 and c equals to 4. Now put the values. 2 into 3 plus 4 equal 2 into 3 plus 2 into 4. अब इसको सोल्व करते हैं. 2 into 4 plus 3 7, 3 2 is 6 plus 4 2 is 8. Now 7 2 is 14 and 6 plus 8 14. It means अगर हम किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, आंसर जो है सेम आएगा. सो हम क्या कह सकते हैं? हम क्यों यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को? वी यूज प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू मेक कैलकुलेशन ईजियर, अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए. तो अगर हम ये यूज करें या ये यूज करें, बोथ आर द सेम, रिजल्ट हमारा सेम आएगा. द नेक्स्ट इज distributed property of multiplication. This is the over addition, and the next is over subtraction. Distributive property of multiplication over subtraction. जैसे हमने फर्स्ट वाले में ओवर एडिशन था, इन दिस हमने क्या यूज किया था? b प्लस सी, इट मीन्स प्लस यूज किया था, ओवर एडिशन. एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस, a into b minus c is equals to a into b minus a into c. Look at this. Put the values same. a equals to 2, b equals to 3, c equals to 4. इसको हम सोल्व करके देखते हैं. तो 2 into 3 minus 4 equals to 2 into 3 minus 2 into 4. So 2 into 3 minus 4. तो इसको सोल्व करके क्या आएगा? प्लस के 3 हैं और माइनस के 4 हैं, तो माइनस के 1 एंड 3 2 is 6 माइनस 4 2 is 8 एंड यू नो 2 1 is 2 माइनस के 2 इक्वल्स टू प्लस के 6 में से माइनस के 8 करते हैं तो माइनस के 2. द रिजल्ट आर सेम. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. सो रिमेंबर दैट हम क्यों यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर. ओके, नाउ आई टेल यू सम एग्जाम्पल. उसके बाद आपकी ये सोल्व हो जाएगी कि हाउ टू यूज. सपोज you want to multiply 824 into 25. सो आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करना है. सो आप इसे कैसे ईजियर कर सकते हैं? 824 मल्टीप्लाई, इंस्टीड ऑफ 25 यू विल राइट 20 plus 5. आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं.
20 प्लस 5, 25 को 20 प्लस 5। एंड नाउ इसको आप सोल्व करो। जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी मल्टीप्लाई इससे भी होती है और इससे भी होती है, तो वी विल राइट 824 मल्टीप्लाई 20 प्लस 824 मल्टीप्लाई 5। एंड नाउ solve this। 16480 plus 4120, the answer is 20600। ओके, एंड और आप ऐसे भी कर सकते हैं 824 इंटू 25, 824 इंटू 25। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 824 आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 800 प्लस 20 प्लस 4। 800 एक्सपेंड कर दो 824 को, 800 प्लस 20 प्लस 4 और मल्टीप्लाई 25 को एज इट इज लिख लेंगे। एंड नाउ जो ब्रैकेट के बाहर होता है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि उसकी मल्टीप्लाई अंदर की हर डिजिट से होती है। सो आप इसको कैसे लिखेंगे? 800 इंटू 25, यहाँ प्लस का साइन है तो यू विल पुट प्लस, 20 इंटू 25, अगेन यू विल पुट द प्लस साइन, 4 इंटू 25। एंड नाउ सोल्व दिस। 25 8 200, ओके, 20,000 प्लस 500 प्लस 25 4 100 and add these 20600। सो आंसर इज सेम। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो भी आंसर यही आएगा और इस तरीके से करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। सो इट मीन्स आप जो यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट मेक्स योर कैलकुलेशन easier। I hope now you understand what is whole number and all the properties of whole numbers. So do all the exercise, and if you have any doubt in any question, then you can write in comment box. Thank you everyone. Stay home.